Hello future doctors, hope all of you are doing great. So today's video is going to be about Uzbekistan, and because a lot of you guys asked me to make video about Uzbekistan as well after watching the previous videos. तो आपका कजाकिस्तान वाली वीडियो हो गई है and we talked about the winter intake and all of that. So this video is kind of like a continuation for that. So we'll be talking about why Uzbekistan is an option that you can consider, basically why a lot of students are opting for Uzbekistan for their MBBS abroad journey, and what is the admission criteria or eligibility criteria and admission process and all of that, and till when you can apply, basically if you are thinking about getting admission in the winter intake itself right now in 2024. So yeah, let's get started with today's video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप MBBS अब्रॉड के बारे में सोचते हो तो दैट इज़ कि आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं है इंडिया में. यू नीड टू मेक श्योर दैट डज द यूनिवर्सिटी और द कंट्री वेयर यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग डज इट फुलफिल द गाइडलाइंस ऑफ द NMC, एंड कि आपके अदर कंट्रीज़ के अंदर भी आपकी वो डिग्री वैलिड है या नहीं है. सो दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड उज़्बेकिस्तान जो है इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि आपकी NMC इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं वो टोटली फुलफिल करता है. This is like your 4 major points. Key duration should be minimum 54 months. There should be 1 year of internship. The medium of instruction should be English medium, and you should be eligible or you should get license in the country where you are getting your degree. तो सारी की सारी चीज़ें fulfill करता है. We'll talk about all of those things. So let's start with the duration. तो duration basically जो है उज़्बेकिस्तान के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ की 5+1 total 6 years duration है. So your 5 years is going to be mostly theoretical part and 1 year is going to be your kind of like internship. And जो minimum 54 months की duration है वो उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. So first point it fulfills over there. Now the second point कि इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली तो शुड बी इन इंग्लिश. तो उज़्बेकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आई विल टॉक अबाउट देयर नेम्स एंड आई विल गिव यू देयर नेम्स एज वेल. तो वो सारी की सारी आपकी फुल इंग्लिश मीडियम ही हैं. आपका फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर कम्प्लीटली फुल इंग्लिश मीडियम में सारा एग्जाम्स भी, स्टडी मटेरियल भी, लेक्चर्स भी, एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश मीडियम ओनली. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इन दैट सिनेरियो इन फॉर दैट एज वेल. नाउ इंटर्नशिप एज आई सेड 5+1 ईयर जो इंटर्नशिप है वो ऑटोमेटिकली वो भी फुलफिल हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी टू गेट लाइसेंस, तो आपको उज़्बेकिस्तान में इट इज़ रियली ईजी टू गेट लाइसेंस. आपका जैसे इंडिया में अभी तक होता आया है, it is same as that, and only once you get out of your university, so you just have to do registration with their local medical council and you are eligible to practice over there. As of now there is no exam or a separate exam for international students or foreign students. In future there are plans or there are some talks about implementing an exam for international students, but let's see, abhi tak kuch nahi hai. So if you are thinking about going this year, so most probably you will also not required to give any exam for the license. बाकी आपके जो कजाकिस्तान है या रशिया है, किसी भी कंट्री में आपको लाइसेंस लेना है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है, तो यू हैव टू गिव द एग्जाम बेसिकली. सो दिस इज़ समथिंग दैट रियली मेक्स इट वेरी वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन यू कैन से फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बचना चाहते हैं एक और अनदर एग्ज़ाम से, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम दोगे, पूरे 6 साल एग्जाम्स दोगे एंड फिर एक एग्ज़ाम, फिर इंडिया आने के बाद एग्जाम. सो इट विल बी अ लिटिल बिट वन लाइक लिटिल बिट ईजियर यू कैन से. एनीवेज अनदर मेजर रीज़न इज़ कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी सूटेबल है फॉर इंडियंस. एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स, हम जिस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स यू विल सी विंटर टेम्परेचर इन सम प्लेसेस मे बी माइनस में भी चला जाएगा, but mostly it is not as cold as lot of other cities in Russia and Kazakhstan basically, क्योंकि we all know रशिया में स्नो भी गिरती है, तो it gets cold sometimes. but आपका उज़्बेकिस्तान में it is not really much of a problem. of course माइनस में कुछ जगह चला जाता है टेम्परेचर, कुछ जगह स्नो भी हो जाती है, बट मोस्टली इट इज़ रियली प्लेजेंट टेम्परेचर. एवरेज जो है आई थिंक -5 तक ही मिनिमम जाता है. And of course in summers it goes up to 35-40 degrees in some places. Other than that, of course it is really close to us also. तो आपका around 2-3 hours की flight होती है, and there are multiple airlines जो कि वहाँ पे जाती हैं. आपका उज़्बेक एयरवेज जाती है, इंडिगो भी वहाँ पे फ्लाई करती है if I'm not wrong.
सो मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं एंड द एयर फेयर इज़ ऑल्सो रियली चीप. सो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स अबाउट उज़्बेकिस्तान जो कि उसको एक काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. And if you are considering studying MBBS in 2024, it may be the winter intake right now or maybe the September intake later on. तो किसी भी उसमें आप यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस अगर आप रशिया या कजाकिस्तान को कंसिडर नहीं करना चाहते हो. अगेन आई वांट टू मेक दिस क्लियर, ओवरऑल कंसिडरिंग ईच एंड एवरीथिंग आपका रशिया वुड बी ऑलवेज द बेटर ऑप्शन, वुड बी द बेस्ट ऑप्शन यू कैन से considering each and everything, but there are these other options as well. सबके अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी अलग अलग बेसिकली क्राइटेरिया होते हैं. एंड दिस हैज़ बिन माई गोल कि आई डोंट रियली ट्राई टू प्रमोट वन पर्टिकुलर कंट्री और वन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन इट सेल्फ. I want to basically give you information about different universities, different countries. सब कुछ मैं आपको basically आपके सामने clear, transparent चीज़ें सामने दिखा दूँ so that you can get enough information to make a decision of all your own basically. So yeah, if we talk about the admission process, it is really simple as most of the other countries. You just have to send us your scanned documents and we'll start the admission process for you. Just your 10th, 12th mark sheet, passport. And if you are considering getting admission in MBBS abroad in any of these countries, you can get in touch with our team. The Eduparity team is always responsive and you can find all their contact details in the description box as well. And now the most important question कि how much is the budget basically, कि इतना आप total 6 years में spend करेंगे and क्या क्या universities हैं. सो बेसिकली ऑन एंड एवरेज जो आपका उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का बजट रहता है, इट इज़ इन बिटवीन 20 to 25 lakhs. इस बजट रेंज में आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं. सो देर आर 4-5 डिफरेंट ऑप्शंस इन उज़्बेकिस्तान. आपका इट इज़ नॉट लाइक रशिया वेर यू हैव मोर देन 20 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. तो उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, सिंस दे आर स्मॉलर कंट्रीज, सो दे हैव लॉट लेस ऑप्शंस. But these are one of the best options. So number one is going to be your Tashkent Medical Academy, then your Fergana State Medical University, then there is Andijan State Medical University. So if you talk about the fee structures of all of these universities, I'll give you a brief idea. For Tashkent Medical Academy, it is going to be around 22.8 lakhs for your entire 6-year duration. And up to 22.8 lakhs mein, it is going to cover your tuition fees, hostel fees, visa extension, registration, administration charges, all of these major things. आपका living expense अलग रह जाएगा. So we will be talking about living expenses also a little bit later on. Other than that, then if you talk about Fergana, so in Fergana also it is going to be around 23.7 lakhs, including everything. Then the Andijan, it is going to be around 22 lakhs. Then there is Samarkand also. Samarkand State Medical University is going to be around 23 lakhs, including your, like this will include again your tuition fees, hostel fees, government registration, visa extension, one-time charges and all of those things. So yeah, ये तो हो गया budget. If you talk about the living expenses, क्योंकि of course you are going to stay there, you are going to eat, you are going to travel, you are going to basically use a lot of other things. So जो लिविंग एक्सपेंस है उज़्बेकिस्तान के अंदर, इट इज़ स्लाइटली लेस एज कम्पेयर टू रशिया एंड कजाकिस्तान. सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक एन एडवांटेजेस पॉइंट यू कैन से. तो मंथली एक्सपेंस ऑन एन एवरेज आपका 10 to 12,000 INR इज़ सफिशिएंट ऑन एन एवरेज. ऑफ कोर्स एज आई ऑलवेज से देर आर स्टूडेंट्स जो कि जो लोअर रेंज है उससे कम में भी काम चलाते हैं, और देर आर स्टूडेंट्स जो कि अपर रेंज से ज़्यादा करते हैं. तो ऐसे भी हैं जो 10 से कम में मैनेज करते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 12 से भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल लाइफस्टाइल एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, but this is an average. One more thing that I forgot to talk about earlier was other than the NMC guidelines or the accreditation or recognition by the NMC, Uzbekistan की जो डिग्री है, it is valid in other countries as well. So you can go for your USMLE or maybe Australia Medical Council or Canada or for GMC or whatever other countries, maybe other European countries. So you can basically go for all these other countries for your future post-graduation, or maybe if you just want to work. So you can get license from all of these countries. आपकी डिग्री जो है वो valid है. So I hope you got a good idea about Uzbekistan. And again, winter session admissions are still open for 2024. So if you want to apply,
you can get in touch with our team, and we'll help you to start your process ASAP. And if you want to know about other options for winter intake, you can watch this video of mine that I made earlier. And thank you for watching. And if you are new, please subscribe and hit that like button as well. See you guys in the next one.